Hello students, so today chapter is from class 6 chapter 3 fiber to fabric. So what is fiber and what is fabric? How we get this fabric from fibers we learn from this chapter. So there is a variety of clothing material or fabric such as cotton, silk, wool and polyester. Means यहाँ पे क्लोथिंग की बहुत सारी मटेरियल्स होते हैं. You all know you use many different types of clothing material like cotton, silk, wool, polyester. How we get these fabric we will know from this chapter, and the process we used to get these fabric, get these fibers, we learn from this chapter. So the next point and this explanation and this notes I take from NCERT book. Okay, so the next point is fabrics are made from yarns which in turn are made from fibers. So first fabric means जो आपका क्या होता है, जो आपके कपड़े होते हैं, जो आपके क्लोथ होते हैं, वो किससे बनते हैं? यार्न से. और यार्न क्या होता है? यार्न बनता है आपका फाइबर से. ओके, तो जो यार्न्स होता है उससे पहले क्या मिलता है हमें? फाइबर्स. और फाइबर्स क्या होता है? बहुत थिन होता है. उसको हम पहले यार्न में चेंज करते हैं और फिर यार्न से हमें फैब्रिक बनता है. तो दिस इज द प्रोसेस. फर्स्ट इफ we talk about cottons, how we get the cotton clothes. So first process is we get cotton rolls from the tree. Okay, then from cotton rolls we get fibers by the process of ginning process. So these process are important according to your exam, your CTED, your UTED exams, right? So in the questions they will ask maybe what is ginning process, and maybe they ask when we get fibers from cotton rolls, then the process is called ginning process, spinning process, yeah, weaving and knitting. So you should learn these things. When we get fibers from cotton rolls, these process are called ginning process. What we call ginning process. तो इसमें होता क्या है? Cotton rolls we get from tree, and we know in the cotton, between cotton seeds पाया जाता है. कॉटन जब हम उससे कॉटन निकालते हैं तो बीच में उसका बीज पाया जाता है. तो जब when we separate cotton from cotton seeds and we get fibers, this process is called ginning process. So you should learn this point is very important. This topic is very important. Ginning process, spinning process, weaving and knitting. If we get next point is fiber or yarns. How we get fibers? How we get yarns from fibers? The process called spinning. यानी कि जो आपको अब रुई मिल गई, अब आपको क्या बनाना है? जैसे आप दिया जलाते हो तो क्या बनाते हो? उसको रोल करते हो ना, तो उसको थ्रेड बनाते हो. उससे पहले तो कॉटन एक उसमें फॉर्म होता है, आप उसको क्या बनाओगे? थ्रेड. यू विल मेक थ्रेड फ्रॉम द cotton. So this process is called spinning process, and we get the thread form of fibers is called yarn. When we get yarn from fibers, the process is called spinning. Spinning means we make thread from cotton. Okay, and the next is if we get fibers in the form of thread. If we get fibers in the form of thread, then you will make your cloth, your fabric. Means when you get cotton thread, you make your cotton clothes. Okay, and the process is called from making fabric from yarn is called weaving or knitting. weaving बुनना या सिलना. आप अपना yarn से fabric बना सकते हैं. वो two types of process है, weaving से या knitting से. weaving means बुनना, knitting means सिलना. Okay, so next topic is natural fibers. What is natural fibers? There are two types of fiber we get from natural fibers and synthetic fibers. So fibers are either natural or synthetic. Natural means जो naturally हमारे environment में मिल जाते हैं. We get naturally from our environment.
that these fibers are called natural fiber. If we get fibers from machines and from some chemical uses, we call these fibers are called synthetic fibers, right? While like example of natural fibers are cotton, wool, silk and jute are some natural fibers, and while nylon and polyester are some example of synthetic fibers. Okay, and the next point is from NCERT is looms. The yarns are much thinner than a paper strip. Of course, yarns में जो आपकी जो thread बनाया था आपने स्पिनिंग प्रोसेस से, तो वो क्या होता है, बहुत पतली होती है, थिनर होती है, तो उससे सीधे डायरेक्ट तो हम बना नहीं सकते कोई चीज़, तो हम उसको यार्न को वेव करके निटिंग करके हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं. तो वी यूज लूम्स एंड द लूम्स आर इधर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड. आप कपड़े सिलते हो या जो स्वेटर्स बनाते हो आजकल, उसके भी क्या है, मशीन्स हैं. यू यूज मशीन्स टू वेव योर स्वेटर्स. So you can operate these looms from your hand or maybe power operated. Okay. Next point is jute. Jute fiber is obtained from the stem of the jute plants. So maybe in questions, maybe question will come, how you get jute from jute plant. So you have to know the answer is you get jute from jute plant from the stem of jute plant. Stem means जो उसकी तना वगैरह होते हैं, ओके, इसको जो टहनियाँ होती हैं पेड़ की, जूट प्लांट की, वहाँ से हमें क्या मिलता है, वी गेट जूट. इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. इसको कब हम कल्टिवेट करते हैं, कब हमें मिलता है, वी गेट फ्रॉम द ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स. मेनली ग्रोन इन इंडिया एंड द क्वेश्चन विल कम मे बी वेयर द जूट वी मेनली ग्रोन इन इंडिया. द आंसर इज वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम. ओके, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम. And in NCERT every point is very important. They make any questions from this topic only, like where you get jute, which part of jute plant give jute, and where mainly grown jute in India. So this topic make 2-3 questions for your exam. So you should make your personal notes, your handwritten notes, and I hope this helps you to clear your exam. Thank you so much.